कलाकारों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनके शोबिस के सफर को आगे ले जाना जब वो देखते हैं किस प्रकार से नेटिजन्स हेटर्स उनको ट्रोल करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ हमारे यही कलाकार यूज्ड हो जाते हैं फैंस के बैकलैश और बेटर रिएक्शन के। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो फैंस और ऑडियंस के इन्हीं कमेंट्स में मुंह तोड़ जवाब देती नजर आती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक अभिनेत्री है जिन्होंने दिया बेफिटिंग रिप्लाई ट्रोलर्स को, उनके बॉडी शेमर्स को और बेटर कुछ ऐसे कमेंट्स का जो उनको मिल रहे थे लगातार। पोस्ट अ ग्लोबल फीड एट अ ब्यूटी पैजेंट, पंजाब की अभिनेत्री हरनाज कौर संधू ने मीडिया की सुर्खियां बेहद गर्म की है। मल्टीपल रीजन से वो मीडिया की सुर्खियां बनाती नजर आई, चाहे वो हो उनका पर्सपेक्टिव हिजाब के बारे में या फिर हो उनका बेफिटिंग रिस्पॉन्स बॉडी शेमर्स के लिए। हरनाज को मिल रहे हैं मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज फेलो मेन एंड रादर नेटिजन्स के द्वारा। देखा जाए तो अभिनेत्री मीडिया की सुर्खियों में नजर आती है बार बार लगातार। सब हेल्थ द टॉप ब्रोक लूज हुआ जब ट्रोलर्स ने देखा कि हरनाज ने एक पॉपुलर फैशन वीक में रैंप वॉक करी, जहां वो नजर आई एक गॉर्जियस वेलवेट गाउन में, अ ड्रेस फॉर शिवान एंड नरेश का शो। She paired the dress with John Jacob's eyewear. While being on the ramp, Hernaz definitely caught the attention of fashion lovers, both for good and for bad. जैसे ये तस्वीरें बाहर आई शो से, जो कि हुई सिंपली वायरल, हरनाज को ब्रूटली ट्रोल किया गया for actually having gained a little weight. Recently at an event, she talked about her weight gain, trolls and how misinformed people are about beauty patterns. अभिनेत्री कमेंट करती नजर आई, Many people do not know I'm allergic to gluten. इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो सफर कर रही है डिजीज से जिसका नाम है celiac. A Punjabi by birth, Hernaz is allergic to a certain type of protein which is abundantly found in wheat, barley and rye due to which her health conditions are likely to suffer. Gluten is a protein जो देता है wheat को एक बहुत ही chewy texture. इसी बात पे जहाँ हरनाज हुई थी ट्रोल अपने इसी प्रॉब्लम के कारण, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ब्यूटी पैजेंट्स is not just all about looking beautiful. While addressing this health condition, she also said that a human body undergoes lots of changes when the location and geographical condition changes. वो कहती नजर आई, When you go to a village, you see changes in your body, and I went to New York for the very first time. It is a whole other world altogether. उन्होंने बहुत ही बोल्डली बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में चर्चा की और बताया किस प्रकार से परसेप्शन ऑफ ब्यूटी वेरीज इन डिफरेंट सोसाइटी। वो कहती नजर आती है, I am someone who believes in body positivity, and one of the Miss Universes for the very first time is going through that. On the platform of Miss Universe, we talk about women empowerment, womanhood, and body positivity. And if I am going to go through that, I know there are a lot of people who are trolling me, and it's okay because that's their mindset, their stigmas. But there is a lot other individuals who are trolled every day, irrespective of their pageant or not. I'm empowering them by making them feel that I feel gorgeous, you are beautiful too. जहां एक तरफ कितने सारे लोगों को बहुत ही गलत परसेप्शन है पैजेंट्स के बारे में, अभिनेत्री इन परसेप्शंस को तोड़ती नजर आती हैं। वो कहती हैं that these pageants are not just driven by external beauty. इसी पर हरनाज को कोट किया गया, कहते थे, For me, everyone is beautiful. It is about how you represent yourself and what kind of ideology you have. Your features do not matter at one moment. If you think that I'm the most beautiful girl, that's why I won Miss Universe, I'm sorry, you're wrong. I might not be the most beautiful girl, but I might be the one of the courageous and confident girls who believes even if I'm fat, even if I'm thin, it's my body. I love myself. I love the changes and you should appreciate it too, because not everyone can go through the changes. So be happy if you're going through changes. If you're facing challenges in your life, you should be thankful because that means something good is going to happen. आपको बता देते हैं that the disease जिससे हरनाज सफर कर रही हैं, that is an autoimmune condition in which the affected person own's immune system works against the body. This autoimmune response is triggered with one eats gluten. इसी के कारण कहीं ना कहीं अभिनेत्री सफर करती नजर आई, लेकिन फिर भी अदाकारा ने लिया है स्टैंड खुद के लिए और ऐसे ही काफी सारे और लोगों के लिए जिनको उनकी बॉडी के टाइप, शेप और बेटर स्ट्रक्चर के लिए किया गया है पास में भी बहुत बार ट्रोल। आप हमारे साथ बने रहिए और नीचे बने कमेंट सेक्शन में हरनाज द्वारा दिए गए इस स्टैंड के लिए, हरनाज द्वारा कही गई इस बड़ी बात के लिए आप क्या कहना चाहते हैं और उनके माइंडसेट पर आपकी क्या राय है, शेयर करना ना भूलिएगा। Until then, stay tuned to TeleChocker for all the more updates about the Tele world. Know all about the Tele world by subscribing to TeleChocker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.